Wonderful morning to dear students. Welcome to e-learning classes of business studies. Dear students, in the previous lecture, we have discussed about the trading procedure on a stock exchange, which involve a lot of steps such as selection of broker, opening demat account with depository, placing the order, match the share and the best price, executing order, issue of contract note, thereafter delivery of share and making payment, and last that was the settlement cycle. Dear students, in today's lecture, that is the 43rd, we are going to discuss about the dematerialization and depositories. So, before we will understand the concept of dematerialization, initially we will see what is the need for the dematerialization, what is the need for this. See, all trading in securities is now done through computer terminals. Since all systems are computerized, buying and selling of securities are settled through an electronic book entry. Now, every of the entry, that is every of the transaction, is executed through the computer terminal. Okay? This is mainly done to eliminate the problems of theft, fake transaction, transfer delays, and the selling of the shares and debentures, and so on. Why it was basically implemented? So it was basically implemented to solve some of the problems or problems of theft, problem of fake transfers, problem of delay in the transfers, problem of a lot of paperwork associated with the selling of shares and debentures when we used to hold them in the physical form, when we used to have them in the form of paper, in the form of securities. So lot of these problems were faced by the investors, which somewhere somehow decreasing the amount of investment. And now what have been done by the government or by the financial institutions, that every of the transaction is now will be executed through the computerized terminal only. See further, now we will discuss the meaning of dematerialization. It is a process where security is held by investor in physical form, is cancelled, and the investor is given an electronic entry or number so that he can hold securities in electronic balance form. So what is this? Dematerialization. Material that is having the physical appearance. Dematerialization, that means the securities which were initially having the physical appearance in the form of papers, in the form of securities, that is converted into the virtual, that is converted into the electronic balance. That is the process known as dematerialization. In short, dematerialization refers to होल्डिंग सिक्योरिटीज़ इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. अगर हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलें बेटा, तो डीमटेरियलाइजेशन क्या है? होल्डिंग ऑफ द सिक्योरिटीज़, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ इन इलेक्ट्रॉनिक मोड, दैट इज़ नोन एज डीमटेरियलाइजेशन. फॉर दिस इन्वेस्टर हैज़ टू ओपन ए डीमेट अकाउंट. इसके लिए इन्वेस्टर को क्या करना होता है बेटा? डीमेट अकाउंट ओपन करना होता है विद एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ, एंड दैट ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज डिपॉजिटरी. क्या बोलते हैं बेटा उस ऑर्गेनाइजेशन को? डिपॉजिटरी. नाउ all initial public offer IPO that we have discussed earlier are issued in the dematerialization form, and more than 90% of turnover is settled by delivery in the demat form. That means most of the transaction IPO, complete all the IPOs are through the computer terminal, and the settlement also 90%, that means most of the settlement also is done through the computerized form. Now SEBI has made it mandatory to trade in demat form only for certain selected securities. और SEBI ने, Stock Exchange Board of India, it has made compulsory to make the transaction or buying and selling of the securities through the demat account. Now, what are the different benefits of dematerialization? Let us discuss one by one. The very first, holding shares in demat form is very convenient
as it is just like a bank account, as very easily it is very hard to carry cash or to save the cash and to protect the cash. But when the all the cash we used to deposit in the bank, a lot of problems and lot of worries of our used to decreases. In the same way, demat account is just an account in which all the financial securities can be deposited. Second point, these demat securities can even be pledged or mortgaged to get loans. That means you can mortgage these securities for getting of the loan from any of the commercial bank or the financial institutions. Next, there is no danger of loss of theft of share certificate. Initially, if we used to have the share certificate and someone has stolen, so it will belong to that particular person. So in this there was a very high risk of the being stolen. But now the chances of the theft have been eliminated with the introduction of the demat account. It reduces paperwork because all the entries are made through the online mode. So even the receipt is also given in the form of electronic mode. So paperwork is minimized over here. Further, it is broker's responsibility to credit the correct number of shares in the investor's account. As soon as you used to deposit money in your bank, so entry is to be made. In the same way, in the demat account, if you have make some more transaction, you have purchased some securities or you have sold some of the securities, so it will be entered in your demat account, and it is the responsibility of whom? It is the responsibility of your broker. And last, securities of different companies can be held in the single demat account. It is not like that if you are investing the money in the Reliance, so you will have a separate demat account. Then you are investing your money in the Tata, then you will have the separate demat account. It is not like that. One single demat account is there, and a lot of type of security, a lot of different companies of securities can be deposited in the same single demat account. Now, how the demat system works. So this is the working of demat system. हम देखेंगे कि डीमेट सिस्टम वर्क कैसे करता है. सो सी द फर्स्ट पॉइंट, बिफोर ओपनिंग अ डीमेट अकाउंट विद द डिपॉजिटरीज, द इन्वेस्टर हैज़ टू सेलेक्ट अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट. सबसे पहले क्या करना होता है, इन्वेस्टर को एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को सेलेक्ट करना होता है. नाउ हु इज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट? Second point, depository participant is the agent of depository. Depository participant कौन है? Depository का एक agent है. It may be a bank or broker or financial service company. कोई बैंक, कोई broker और कोई financial service provider company क्या हो सकती है आपकी? depository participant, जिसको हम लोग short form में DP बोलते हैं. थर्ड स्टेप देखिए, फिलिंग ऑफ एन अकाउंट ओपनिंग फॉर्म. अब एक आपको अकाउंट ओपनिंग फॉर्म आप फिलअप करेंगे. कौन? obviously the investor, along with the pen card and other details, address and the further photograph and the particular other information is to be submitted. Thereafter the physical share certificate is given to the depository participant. Initially अगर आपने कोई shares आपके पास हैं और आपके पास उसके certificates हैं, तो आप वो किसको provide कर दोगे? Obviously to the depository participant along with the request, और एक साथ में request दोगे that convert the physical certificate or the share certificates into the electronic mode. That means just for the dematerialization you will request for the dematerialization कि जो physical securities हैं आप उसको electronic securities में क्या करिए? convert कर दीजिए. Next, if shares are applicable in IPO, then simple detail of the demat account and the depository participant to be given allotment would automatically be credited in the डीमेट अकाउंट. और अगर ये आपका क्या है, थ्रू द IPO है, तो इट इज़ कंपलसरी फॉर IPO दैट एवरी ऑफ द ट्रांजेक्शन विल बी इन द डीमेट अकाउंट. तो उसके लिए आपको कोई स्पेशल रिक्वेस्ट प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है. ऑटोमेटिकली जो आपका अमाउंट है, जो आपका ट्रांजेक्शन है, वो किसके थ्रू होगा? आपके डीमेट अकाउंट में होगा. Next, if shares are to be sold through broker, the depository participant must be instructed to debit the account with the number of shares sold. ठीक है, whatever the transactions are made, उसकी entry ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट. इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ब्रोकर कि वो उसको क्या करे? प्रॉपरली एंटर करे. नेक्स्ट, द ब्रोकर कैन गिव इंस्ट्रक्शन टू
his depository participant for delivery of shares to the stock exchange. अब जो ब्रोकर है वो अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को, अपने बैंक को, फाइनेंशियल फर्म को बता सकता है कि दैट द शेयर्स आर टू बी परचेज और द सोल्ड थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज. Next, the broker then receives the payment and pays the person for the share sold. क्या हुआ बेटा, सबसे पहले डिपॉजिटरी आया, डिपॉजिटरी के बाद डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, और इस डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के बाद आपके इंडिविजुअल ब्रोकर भी आ सकते हैं. तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो ब्रोकर था उसने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को बताया दैट शेयर हैव बीन सोल्ड. वहाँ से अमाउंट रिकवर करने के बाद डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ने अमाउंट किसको दिया, ब्रोकर को दिया, एंड नाउ द ब्रोकर इज गिविंग अमाउंट टू द ऑब्वियसली टू द इन्वेस्टर. नेक्स्ट, ऑल दीज ट्रांजेक्शन्स आर टू बी कम्प्लीटेड विद इन 2 days. कितने डेज में कंप्लीट होने चाहिए, विद इन 2 days, क्योंकि हमको पता है दैट द ट्रांजेक्शन साइकिल इज T+2 days. ट्रांजेक्शन डेज प्लस 2 extra days, and 2 extra days must be the working days, and from it is applicable, this rule is applicable since April 2003. कब से applicable है बेटा, 2003 से. नाउ कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द डिपॉजिटरी सिस्टम. अब जो पूरे डिपॉजिटरी सिस्टम है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं, तो देयर आर ओनली 2 मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर देयर. द फर्स्ट इज डिपॉजिटरी एंड द सेकंड वन इज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जिनको हमने बहुत बार सुना है. So initially we will discuss about the depository and then depository participant. Who is depository? Depository is the apex organization और द यूनिट इन द डिपॉजिटरी सिस्टम. ठीक है, डिपॉजिटरी क्या है बेटा, एपेक्स इंस्टीट्यूशन है. एपेक्स दैट मीन्स द हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन दैट इज वर्किंग इन द डिपॉजिटरी सिस्टम. वी ऑल नो दैट देयर आर ओनली 2 डिपॉजिटरीज इन आवर कंट्री, NSDL दैट इज नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड एंड CDSL Central Depository Services Limited. Now see further, depository is just like a bank where depositor or investor can deposit and withdraw the money or the security. Depository क्या है, it is just like the bank where you can deposit or withdraw the particular money that you have invested. In a depository एन इन्वेस्टर कैन डिपॉजिट एंड विड्रॉ हिज शेयर्स. क्या कर सकते हैं, शेयर को हम लोग डिपॉजिट भी कर सकते हैं और शेयर को क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं. शेयर को विड्रॉ करते हैं किसके फॉर्म में, ओबियसली मनी के फॉर्म में. सी फर्दर फीचर्स ऑफ डिपॉजिटरी. अब इस डिपॉजिटरी के कौन कौन से फीचर्स होते हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन. द वेरी फर्स्ट, डिपॉजिटरी इज एन इंस्टीट्यूशन विच होल्ड्स सिक्योरिटीज सच एज शेयर्स एंड डिवेंचर्स. ठीक है, डिपॉजिटरी क्या है, वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन है जो कि फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ को होल्ड करता है. Second, depository interacts with the investors through agents called depository participant. अब डिपॉजिटरी कभी भी डायरेक्टली इन्वेस्टर से इंटरेक्ट नहीं करता. जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कभी भी कॉमन पब्लिक से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता, तो क्या होता है बेटा, बीच में कमर्शियल बैंक्स आते हैं. इन द सेम वे हियर ऑल्सो एजेंट्स इन मिड बिटवीन विल बी देयर एंड दीज एजेंट्स आर नोन एज द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स. क्या बोलते हैं बेटा, इनको हम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स बोलते हैं. Next, depository participant can offer services only after obtaining the SEBI certificate that we have discussed earlier. Thereafter, next point, investors have to open depository account with any depository participant called demat account discussed earlier. Next, depository with the help of depository participant controls the electronic transfer of securities and settlement of transaction. That means depository with the help of, depository क्या करता है, पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है, but not alone with the help of the depository participant. Next, depository can hypothecate and dematerialize securities against bank loan. That means कि हम क्या कर सकते हैं, इन securities को against the bank loan present कर सकते हैं. Next, depository issues receipt of bonus shares in the electronic form. Obviously, when the shares will be in the electronic form, then bonus shares will also be in the electronic form only. Next, depository offers nomination facility of the demat account. जो demat account को open करने के लिए भी जो nomination work है वो भी कौन करता है, depository execute करता है. Now the second element, that is the depository participant, जिसको हम लोग बोलते हैं DP. See, first point, depository participant is an agent of depository. DP कौन है, एजेंट है. किसका एजेंट है, डिपॉजिटरी का. एन इन्वेस्टर हैज़ टू इंटरेक्ट ओनली विद अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, नॉट विद द डिपॉजिटरी. जितनी भी डीलिंग एक इन्वेस्टर करता है वो ओबियसली किससे करता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से करता है, ना कि डिपॉजिटरी से. नेक्स्ट, एज पर सेबी गाइडलाइंस एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, द शेयर ब्रोकर
banks etc can become depository participant after registration with SEBI. कोई भी पर्टिकुलर बैंक हो सकता है, कोई अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, कोई और ब्रोकर हो सकता है, बट इट मस्ट बी दैट पर्टिकुलर एलिमेंट मस्ट बी रजिस्टर्ड विद SEBI. नेक्स्ट, depository participant is the vital intermediary. What is a vital? That means important. Vital intermediary in depository system, and all buying and selling of shares under depository system टेक प्लेस थ्रू डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट. दैट मीन्स कि अगर हम लोग इस डिपॉजिटरी सिस्टम की एक फंक्शनिंग की बात करें तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. नेक्स्ट, stock exchange. In this, first one is Sensex and the second one is Nifty. And what is Sensex? This is Bombay Stock Exchange Index. क्या है ये? बॉम्बे का स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स है. इट इज़ कैलकुलेटेड by taking prices of 30 stock across key sector of BSE. अब यहाँ पे जो प्राइसेस हैं सिक्योरिटीज़ की, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ की, हाउ दे आर डिसाइडेड? दे आर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द 30 स्टॉक एक्सचेंज दैट आर एनरोल्ड विद द BSE, दैट इज़ द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. ठीक है, उनकी जो प्राइसेस हैं उसको एवरेज लेके ये प्राइसेस को क्या करता है बेटा? कंस्टिट्यूट करता है. द सेकेंड वन दैट इज़ द निफ्टी. दिस इज़ द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स. ये नेशनल लेवल पे है, प्रीवियस वाला आपका स्टेट लेवल पे था. आगे देखेंगे, इट इज़ कैलकुलेटेड. यहाँ पे हम लोगों ने सुना सेंसेक्स इतना ऊपर चला गया, निफ्टी इतना नीचे गया है ना. तो ये जो सेंसेक्स और जो निफ्टी है इनको कैलकुलेट कैसे करते हैं? दैट हैव बीन टोल्ड. इट इज़ कैलकुलेटेड बाय टेकिंग प्राइसेस ऑफ 50% ऑफ की स्टॉक्स of listed in the NSEI, that is National Stock Exchange of India. तो यहाँ पे जो प्राइस का डिटर्मिनेशन है वो किसके बेसिस पे होता है? 50% ऑफ की स्टॉक्स, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट स्टॉक हैव बीन विद द पर्टिकुलर निफ्टी. जितने भी इसके पास फिनेंशियल सिक्योरिटीज़ हैं मेजर 50%, उनके प्राइसेस के बेस पे निफ्टी की वैल्यू क्या होती है? डिसाइड होती है. एंड देन वी कम टू नो दैट हाउ मच निफ्टी हैज़ गॉन अप और कम डाउन. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे बेटा. डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया? टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट द डीमटेरियलाइजेशन एंड द बेनिफिट्स ऑफ डीमटेरियलाइजेशन, देयर आफ्टर वर्किंग ऑफ डीमेट अकाउंट, thereafter constituents of depository system, in which we have discussed about depository and the depository participant, and the last one that is a stock exchange indices, जिसमें हम लोगों ने सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में हमने डिस्कस किया. So this is all about today. God bless you all.